Okay, so good morning, everybody. Welcome to day 6 of the Magic Book session. And before we start with the reading of today's session, do you guys have anything that you would want to share or ask? So, you can unmute yourself and share or ask. Am I audible to everybody? Yes, ma'am. Okay, so if who all did yesterday's exercise, Kalki exercise, Magic Money, who all did yesterday's exercise? Satvik did, Tanay did, who else? Manya, Preeti ji, Pari, Rachna ji. Awesome. So, how was your experience? Would any of you want to share आपका experience कैसा था when you did yesterday's exercise? आपका पूरा दिन कैसा था? Were you feeling better about your money situation, or was it still the same, or what? Okay, it was better. Tanay feels better. All right. Who else? Reassured. Yes, I did. Okay. Awesome. So, anything else that anybody, any doubts related to yesterday's chapter? No, ma'am. Okay, all right. Or any of the previous chapters. So, in the group yesterday, one of the participants, I think she shared her exercises, her assignments in the group yesterday. So I was just going through her assignments. The way she's made it's pretty. It's actually beautiful and inspiring to maintain a diary like that. But after going through her diary, I did notice a few things that required some correction. So this is the reason why we suggest MIS program for everybody, because a lot of times हमें लगता है कि हमें आ गया है, but then when people actually sit to write those things down, the format is a little incorrect. So what she wrote was beautiful, but half of it was missing. In a lot of those things usme the why was missing. So, just my suggestion, especially for the kids, the elders might still get what they have to do, but for the kids, I will still suggest, if you can all also register for the MIS program, then we will make sure that you write everything down in the correct format. Because right now, even when you are doing the exercises every day, if the format is a little incorrect, so that prevents the results from happening a little faster. So just my suggestion. Rest is absolutely up to you. So if you would want the link to the MIS registration form, just leave me a message after the session. All right. So anything else that anybody would want to share or ask? Okay, ठीक है. So today's chapter is called Works Like Magic. And so for the people, यहाँ पे we also have school students, people who are going to the school. So आपके लिए works like magic. So this exercise is for the people जो अपने work में they want some progress. And for the school students, because अभी हम काम नहीं कर रहे हैं, what you can do is you can replace the same thing for your schools. So, how we are going to do that, we'll read that in today's chapter. So, who would like to nominate themselves to read the chapter in Hindi? Okay, Vanya. All right. So, we still have 4 more minutes before we start with the reading. Meanwhile, what I can do is I wanted to show you guys a video which I talked about on day one. So, on day one, I was talking about how blessings can make you fly, how powerful blessings are. So I just want to quickly show you all a video, which is a 4 minutes video, and let's see how powerful blessings.
really are. All right, just give me a minute. Okay, can you all see the screen? Yes, ma'am. All right. Let me know if the audio is also clear or not. वेलकम। और आज हम बात करने वाले हैं अपनी लाइफ में दुआओं की, ब्लेसिंग्स की, कि आजकल की लाइफ में हम कितना मिस करते हैं इस पार्ट को। पहले जब हम किसी बुजुर्ग से मिलते थे, रिश्तेदारों से मिलते थे, किसी का पैर छूते थे या किसी से वैसे भी गले मिलते थे, तो फ्री में इतनी दुआएं मिल जाती थी, सदा सुहागन रहो, दूध नौ पूतो फलो, तेरी जोड़ी रली रहे। तो इतनी सारी दुआएं मिलती थी जो कि आज की डेट में कहीं ना कहीं किसी वजह से मिस होने लग गई हैं। पर हमारी लाइफ में एक्चुअली में ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है, हर किसी को, हर समय। सो लेट्स सी, अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा एरिया है जहां पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जहां पे आप सच में चाहते हो कि कुछ कुछ हो उस एरिया के अंदर, अगर दुआएं लगती हैं अपनों की या अपने फ्रेंड्स की या जानकारों की भी, कोई भी जो दिल से दुआ दे, ब्लेसिंग्स दे, तो आप उस एरिया में सच में राइज अप होते हो, आगे बढ़ते हो। आगे मतलब उस पर्टिकुलर, चाहे वो फाइनेंस का एरिया है, हेल्थ का एरिया है या रिलेशनशिप्स का एरिया है, आप उसमें ऊंचा उठना शुरू कर देते हो। कैसे, देखें। तो ये जगजीत है आज हमारे साथ। माय नेम इज अश्विन, दिस इज विनीता। ये इनकी हेल्प है, मतलब घर पे इनकी बहुत बहुत सेवा करती है। एनी, नोना एंड भैया। अगेन भैया को मैं नाम भूल गई, विकास। तो विकास भैया से मैं थोड़ी जल्दी में है, इसलिए हम जल्दी जल्दी काम करेंगे। सो आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा एरिया जिसमें आपको कुछ कुछ अपना, मतलब कहते हैं लेवल नेक्स्ट चाहिए अब? सर, a happy relationship. हैप्पी रिलेशनशिप। कितना वेट है इस समय आपका? 91. और आपके रिलेशनशिप्स में हैप्पीनेस इज समथिंग दैट यू रियली वांट? I'm looking for a new relationship which is a happy relationship. वंडरफुल। लुकिंग फॉर अ न्यू रिलेशनशिप व्हिच इज अ हैप्पी रिलेशनशिप। अभी हम दुआएं नहीं दे रहे, अब हम वैसे देखते हैं कि क्या आप इस रिलेशनशिप के एरिया में और आगे बढ़ सकते हो या उठ सकते हो। लेट्स सी, क्या हम इन्हें 2 उंगलियों से ट्राई कर रहे हैं कि इस लेडी को उठाने की। लेडी का नाम भी है जगजीत को उठाने की। 90 केजी की लेडी। तो क्या हम इन्हें उठा सकते हैं अभी? अभी जो है थोड़ा सा उनके लिए और हमारे लिए जो दुआओं का बिलीफ है, अभी अभी नहीं हमने किया, अब हम शुरू करते हैं। सो डू यू रियली बिलीव आपको एक नया रिलेशनशिप चाहिए जिसमें हैप्पीनेस है? Yes. ठीक है, 100%. 100% she want it, she has a believe on it, and now we all will together create for her. And दुआओं के साथ हम create करते हैं, blessings के साथ. So we will bless her with the same. Wow. God bless you. Your faith, your belief, and blessings together can do magic, can do miracle, and it can be applied in any area of your life. So keep taking blessings. आपका कैसा experience रहा? Very good. I felt like I was very light. Feather light? Feather light. मतलब हमें भी ऐसे लगा हमने किसी feather को उठा लिया। और मतलब आपको लगा कैसा लगा? so heavy. You know? बहुत हल्का, बिल्कुल ऐसा लगा कि आप हमारे हाथों में थे ही नहीं। You were just feather light, and similarly आप लाइफ में कहीं पे भी अटके हो, that area becomes feather light to grow, progress if blessings are with you. So keep taking blessings। घर में बुजुर्गों से, अपने माता पिता, अपने अंकल आंटी, अपने रिश्तेदार, पड़ोसी, जिससे भी मिले बटोर लो, मतलब जो भी करना पड़े उसके लिए। इवन सड़क पे खड़ा भिखारी भी अगर 10 रुपए देने से आपको ब्लेसिंग्स देता है, इट्स अ वेरी वेरी चीप डील, ले लो। So blessings work magically wonder in your life. So thank you for Thank you being so there. much. Thank you.
All right. So was the video clear to everybody? Yes? No? All right. Perfect. So this video, wonderfully shows how blessings are, so important, and it really helps. It really helps in lifting you up in any area of your life, no matter where you are currently in your life. If you want, आपको कोई भी प्रोग्रेस चाहिए किसी भी एरिया में अपने लाइफ के, start looking for blessings, start collecting blessings. And this is the very reason why Count Your Blessings is the first exercise that was taught to us in this world of magic. And इसीलिए बोला गया था कि इसको आपको आने वाले हर एक दिन करना है सुबह सुबह, followed by magic rock रात को, so that you wake up in a state of gratitude and also sleep in a state of gratitude. आप रात को सोए भी अपनी blessings count करते हुए थे, एंड सुबह की शुरुआत भी आपने ब्लेसिंग्स को काउंट करते हुए की थी. सो इट इंश्योर्स कि आप जिस भी एरिया में आपको प्रोग्रेस चाहिए या अपने लाइफ में इन जनरल आपको ऊपर उठना है, सो ब्लेसिंग्स हैव दैट पावर टू मेक यू फ्लाई. ऑल राइट. सो Vanya, right? Vanya, you nominated yourself to read the chapter. Yes, ma'am. All right. Can you see the screen? Yes, ma'am. Okay, you can start reading. छठा दिन, जादू की तरह काम करना. अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को ले, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाए जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक, जो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचाने के लिए विवश कर देते हैं. टॉम रॉबिन, जन्म 1936, लेखक. ऐसा ऑल कैसे? राइट. ऑल राइट. सो अगर आप कोई भी गतिविधि मतलब कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कला मतलब आर्ट, शिक्षा, एजुकेशन, डिसिप्लिन, कुछ भी या योग्यता को ले, या एनी स्किल, सो यू हैव एक्टिविटी, आर्ट, डिसिप्लिन एंड एनी स्किल. आप इनमें से किसी भी चीज को ले, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाए जहां तक यह पहले कभी नहीं गई है, एंड इस चीज को लेके आप इसको उस लेवल तक पुश करें जहां तक आप आज तक इसको आपने उस लेवल तक इसको आज तक पुश नहीं किया होगा, उसके भी आगे, पुश इट बियॉन्ड फ्रॉम वेयर it has ever been before, it has ever reached before. एंड इसको इतने आगे तक आप इसको ढकेल दे अपने इन एक्टिविटीज, आर्ट. ढकेलने से मतलब अपने स्किल्स को इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर ले, इसकी पावर को इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर ले, एंड इतना ज्यादा बढ़ा ले जहां तक आपने कभी सोचा ही नहीं था. एंड जब आप इसको इतना ज्यादा आप इसको पुश करते रहते हैं, पुश करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, तब फाइनली ये एक ऐसे लेवल पे आता है कि आप इसकी, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप किसी चीज को ऊपर भेजते जा रहे थे, भेजते जा रहे थे, भेजते जा रहे थे, एंड अब फाइनली वो चीज इतनी ऊपर आपने उसको पुश करके भेज दिया है कि इट फाइनली एंटर्स द रेल्म ऑफ मैजिक. सो टेक एनी आर्ट, एनी डिसिप्लिन, आप उसको अगर जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, जितना ज्यादा यू पुश योर सेल्फ, उतना ही ज्यादा आप उस एरिया में यू पुश दैट थिंग इन द रेल्म ऑफ मैजिक, एंड तब उसी चीज में आप प्रोग्रेस देखते हो, उसी चीज में आप अपने आप को बढ़ता हुआ देखते हो, और हर एक चीज एकदम स्मूथली होती है. ऑल राइट. ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीब में पैदा हुआ, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी समाज खड़ा करके संसार के सभी अमीर लोगों में से एक बन जाता है? और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता? सफलता यह खोई हुई कड़ी है, कृतज्ञता, क्योंकि 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 आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है. इसकी कृतज्ञता के बगैर
स्थायी सफलता पाना असंभव है। कंटिन्यू। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, जो आपके पास पहले से ही है। जिसके पास भी कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, वो अधिक दिया जाता है और वह समृद्ध होता है। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब उससे ले लिया जाएगा। ओके, सो हैव यू सीन सच पीपल, मतलब ऐसा इंसान जो who was not born into a very financially strong family, so but that person goes on to become the richest person in the world, or goes on to become a prime minister or a president or a celebrity or any of those things. So some people जिनके पास पहले कुछ भी नहीं था, आज उनके पास कितना कुछ है. So if you know of such people, just write down a few names in the chats कि आप किन किन ऐसे लोगों को जानते हो जिनके पास स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, लिटरली कुछ भी नहीं था, एंड नाउ दे हैव अब वो सेलिब्रिटी है या कोई प्रेसिडेंट है या कोई वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड है. आप अगर ऐसे किसी भी लोग को जानते हो, जस्ट राइट डाउन देयर नेम्स इन द चैट्स. Narendra Modi, exactly. Who else? Dhirubhai Ambani, Bill Gates. Right. So all these people, they literally they did not have a lot of things to start off with. Education के लिए भी इनके पास they did not have enough money या proper education नहीं थी. But regardless of all of this, these people went on to become one of the most influential people in the world, one of the most successful people in the world. And how was that? ऐसा क्यों हुआ? It was mainly because all these people had a few things in common, which was the determination and faith कि अरे मैं जहाँ पे भी हूँ उससे मैं जिस जगह अभी हूँ वो मेरा फ्यूचर नहीं है. This is not my future. I know what I'm capable of. So they believed in their dreams. सबको अपनी ड्रीम पे बहुत विश्वास था. And second was gratitude. And because of all these things, these people went on to become one of the richest people or successful people or powerful people in the world. और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियां छू लेता है जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है. So there are these kind of people जिनके पास कुछ नहीं होता है but eventually they have everything, literally everything in this world. And second example is कि दो लोग let's take अभी जैसे जो लोग स्कूल में हैं. So two students who have the same caliber, same दिमाग है, दिमाग सेम नहीं एज इन मतलब दोनों इक्वली पढ़ाई करते हैं, इक्वली मेहनत करते हैं. और in your work also you can see, so two people जिनकी सेम पोस्ट पे स्टार्ट होती है, both of them are equally talented and capable of taking up their respective jobs. तो वो लोग अपने जॉब्स में सेम पोजीशन पे स्टार्ट करते हैं. बट व्हाई इज दैट? इक्वली केपेबल होने के बाद भी एक पर्सन की प्रमोशन होती जाती है, वो और ज्यादा सक्सेसफुल होता जाता है अपने वर्क में. बट दिस अदर पर्सन, वो या तो उसी जगह पे रहता है या देयर इज नॉट मच प्रमोशन, या क्या पता उसको निकाल दिया जाता है या कम होती जाती है. सो ऑल दीज पीपल, व्हाई इज दैट? मतलब दो लोग थे, सेम ही पोजीशन पे स्टार्ट किया, सेम दोनों लोग ने मेहनत करी, बट एक इंसान को प्रमोशन मिलती गई, दूसरा वही का वही रह गया. एंड लेकिन जी तोड़ कोशिश के बावजूद सफल नहीं हो पाता. सफलता यह खोई हुई कड़ी है
सफलता यह खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। So why does all of this happen? It's because somewhere this other person was lacking the gratitude towards his job, या वो जिस भी पोजीशन पे था उस टाइम उसको जो भी चीजें मिल रही थी उस टाइम मे बी दैट पर्सन wasn't being grateful for what he already had, एंड उसका बस सारा फोकस उन सारी चीजों पे था जो जो उसके पास नहीं था। एंड दिस अदर पर्सन, he was very grateful, he or she was very grateful about his or her work, and that's the reason why मेहनत तो उसने की बट रिजल्ट्स भी इसलिए उसको इतनी तेजी से मिले बिकॉज उसने ग्रैटिट्यूड की पावर को यूज किया, because that person used the power of gratitude. And if you want to attract success, if you want to attract success and permanent success के लिए आपको gratitude practice करनी ही करनी पड़ेगी। This ensures, gratitude is one thing which ensures कि आपके लाइफ में जो भी चीजें आएंगी अच्छी चीजें, तो अगर आपको उसको परमानेंट बनाना है सो ग्रैटिट्यूड इंश्योर्स कि वो चीज़ आपकी लाइफ में हमेशा रहे, हमेशा रहे। सो एज लॉन्ग एज यू आर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड इन दैट एरिया, तब तक वो चीज़ आपकी लाइफ में हमेशा रहेगी। ओके, यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। Right. So if you want to bring success, opportunities, promotion, more money, and all these kind of things in your life, in your job, in your work, in your school, in your college, so for that you need to start practicing gratitude. And आप जितना ज़्यादा gratitude practice करोगे, उतना ही ज़्यादा आप उस एरिया में अपने आप को आगे बढ़ता हुआ पाओगे। एंड रिमेंबर, जिसके भी पास कृतज्ञता होती है, सो whoever has gratitude, आज के केस में इट्स योर वर्क, योर स्कूल, या आपकी नौकरी, कारोबार, योर बिजनेस, एनीथिंग, अगर आपके पास अपने इन चीज़ों के टुवर्ड्स अगर आप ग्रेटफुल हो, तो उस एरिया में आप और ज़्यादा बेहतर चीज़ें अपने आप को पाते हुए पाओगे। एंड इफ़ यू आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल, तो आपके पास जो भी है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। ओके। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप स्वस्थ ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप काम कर देते हैं, तो आपको मिलता भी कम है और अपनी ओर आने वाली चीजों भी कम हो जाती है। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से भी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे अपनी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा, और अंततः इसका हास्य होगा, जिसके अर्थ है कि आप अपनी नौकरी जा भी सकती है। याद रखिए, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। राइट। सो जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, सो व्हेन यू आर ग्रेटफुल अबाउट योर वर्क, कुछ भी वर्क हो, आपका वर्क हो, पढ़ाई हो, अगर आप उसके टुवर्ड्स अगर आप ग्रेटफुल होते हैं, अगर आप थैंकफुल होते हैं, तो आप अपने लाइफ में उस एरिया में, अपने वर्क में, अपने पढ़ाई में आप और ज़्यादा सक्सेस पाते जाओगे, एंड आपको वो काम करने में भी मज़ा आएगा बिकॉज़ आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो। सो ग्रैटिट्यूड आप तभी किसी चीज़ को दे पाते हो जब आपको उसमें कुछ अच्छा मिलता है, अच्छा सीखने को मिलता है। So when you start looking for things to be grateful about in your work, you will automatically start to like your work. आपको और ज़्यादा फिर मज़ा आने लगेगा। मे बी आपको अभी मज़ा नहीं आता हो अपने काम करने में या पढ़ाई करने में, बट व्हेन यू स्टार्ट गिविंग ग्रैटिट्यूड फॉर योर वर्क, एंड आप रियलाइज़ करोगे कि इससे क्या-क्या कितनी सारी ब्लेसिंग्स है मेरी इस वर्क से रिलेटेड, क्या कुछ नहीं कर पाता हूँ मैं बिकॉज़ ऑफ दिस। सो यू विल स्टार्ट टू एन्जॉय डूइंग योर वर्क,
एंड बिकॉज यू बीइंग ग्रेटफुल एंड आप उसको और इंजॉयमेंट के साथ कर रहे हो, so that guarantees success in that area of your work or your studies. बट अगर आप, इफ यू आर नॉट बीइंग वेरी ग्रेटफुल, आप कभी हैप्पी नहीं रहते हो अपने वर्क पे, बस बोलते हो कि यार मेरा बॉस तो इतना खड़ूस है, या मेरी टीचर जब देखो इतना होमवर्क दे देती है, इतना डांट देती है, या ऑनलाइन यार कितना बोरिंग हो जाता है, मेरा तो मन ही नहीं करता कैमरा ऑन करके पढ़ाई करने का, एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, या टीचर को तो ऑपरेट ही नहीं करना आता, वो पता नहीं क्या पढ़ाती रहती है, कुछ भी बोलती रहती है, एनी काइंड ऑफ थिंग, मतलब किसी भी टाइप की अगर आप कंप्लेन कर रहे हो, या वर्क से रिलेटेड कि यार बॉस तो, मतलब मैं तो इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, इस इंसान की तो प्रमोशन पे प्रमोशन हो ही जा रही है, एंड मैं तो उससे ज्यादा टैलेंटेड हूँ, उसको तो इतना कुछ आता भी नहीं है, उससे ज्यादा तो मुझे आता है, मेरा एक्सपीरियंस मेरी एजुकेशन उससे ज्यादा है, उसे पता नहीं क्यों प्रमोशन मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, या फिर क्या बोनस नहीं आ रहा है, इंसेंटिव नहीं मिल रहा, या सैलरी आने में जब देखो लेट होता रहता है। सो एनी एनी काइंड ऑफ कंप्लेन, किसी भी टाइप की कंप्लेन, अगर आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, या अगर आप अपने मार्क्स से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, या आप अपने बॉस के बारे में कंप्लेन कर रहे हो, या टीचर के बारे में कर रहे हो, या अपने कलीग के बारे में कर रहे हो, एंड यू ऑल्सो आप ये बोल रहे हो कि मैं तो उससे बेहतर हूँ, उसको क्यों मिल रहा है, मुझे मिलना चाहिए था, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो जब तक आप ये करते रहोगे, तो आपके लाइफ में जो ऑलरेडी चीजें हैं, लाइफ मतलब वर्क, आपके वर्क या आप स्टडीज में जो भी प्रेजेंटली आपकी जो भी सिचुएशन है, आप ये बात याद रख लेना, बिकॉज यू आर कंप्लेनिंग, तो वो जो चीज है, जो जिसके पास कृतज्ञता नहीं होती है, जो भी उसके पास है वो उससे ले लिया जाएगा। So that means you could also lose your job if you continue to complain, 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 complain. या पढ़ाई में भी आप के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, मे बी टीचर्स आपको और ज़्यादा डांटने लगे, और ज़्यादा क्या पता आपको होमवर्क मिलने लगे, एंड फिर क्या पता आपके पास टाइम भी नहीं हो उस होमवर्क को करने का, या एनी एनी ऑफ दीज थिंग्स, या पढ़ाई में आपकी परफॉर्मेंस डाउन होने लगे। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन स्टार्ट टू हैपन, मतलब मैं ये नहीं बोली कि जो मैं बोल रही हूँ वही वही होगा, बिकॉज एवरीबडी कैन हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस उनके थॉट्स पे बेस्ड। सो जस्ट गिविंग अ फ्यू एग्जांपल्स कि अच्छा ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सो यू कुड इवन लूज योर जॉब, बट वी डोंट वांट टू डू दैट। सो नाउ अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, सो व्हाई नॉट एंजॉय इट, मतलब बुरा लगा के क्या होएगा, सो व्हाई नॉट एंजॉय डूइंग योर वर्क। ओके। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं, उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रण करके खुद को मिलने वाली धनराशि को मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं, तो आपको कारोबार की मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितना अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फल फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगता है, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम के लिए बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है। जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभव को आकर्षित करते हैं। राइट। सो आप जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड देते हो, सो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ग्रैटिट्यूड दैट यू रिसीव इन रिटर्न। तो अगर आप ज्यादा ग्रैटिट्यूड दोगे, तो उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न में यू विल सी द रिजल्ट्स हैपनिंग उतने ही एक्सटेंड के साथ। तो ज्यादा ग्रैटिट्यूड दिया आपने किसी चीज में, तो आप वर्क में उसी एग्जैक्ट उतनी ही मात्रा से, उतनी इंटेंसिटी से आप अपने वर्क में प्रोग्रेस देखोगे, या अपने स्कूल में आप प्रोग्रेस देखोगे। एंड ऑन द अदर हैंड, जितने ज्यादा अमाउंट से आप कंप्लेन करोगे, उतनी, सो दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिंग दैट यू रिसीव इन रिटर्न।
तो अगर आप ज़्यादा कंप्लेन करोगे, उतनी तेज़ी से आप देखोगे आप अपने वर्क या अपने स्कूल में आपकी जो भी प्रोग्रेस थी वो कम होती जाती, कम होती जाती, कम होती जाती है। So the amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. अगर आप कोई बिज़नेस ओनर है, सो यदि आप किसी कारोबार में मालिक हैं, अगर आप किसी बिज़नेस के ओनर हैं, तो जितना ज़्यादा आप अपने बिज़नेस के टुवर्ड्स आप ग्रैटिट्यूड देंगे या नहीं देंगे, उसी हिसाब से आपका बिज़नेस में प्रोग्रेस होएगा, आपका बिज़नेस उसी हिसाब से प्रोग्रेस करेगा। तो किस-किस तरीके से हम ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं अपने बिज़नेस में? वेट, there's some disturbance in the background. ओके, हाँ। सो आप किन-किन चीज़ों के लिए दे सकते हैं? आप अपने वर्कर्स के लिए ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, अपने आप कस्टमर्स के लिए दे सकते हैं, आप जो मशीनरी यूज़ करते हैं, आप उन सारी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। या जिन लोगों से आप मटेरियल्स परचेज़ करते हैं, आप उन लोगों के टुवर्ड्स आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। सो एनी एनी ऑफ दीज़ पीपल या आपके पास जो भी मशीनरी है, जो टेक्नोलॉजी है, उन सब के लिए भी आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हो। या जिन लोगों ने आपकी कंपनी को सेटअप करने में हेल्प करी, एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग, आप किसी को भी ग्रैटिट्यूड दे सकते हो अपने वर्क पे। अपने ऑफ़िस को ग्रैटिट्यूड दो, अपने ऑफ़िस की बिल्डिंग को ग्रैटिट्यूड दो। Employees, workers, laborers, daily wagers, customers, all these people, machinery, anything, materialistic things also आप उनको भी gratitude दे सकते हो. So if you're a business person, आप यहाँ gratitude दे सकते हो. Second is if you are a parent, अगर आप अभिभावक हैं and आपका काम है अपने बच्चों का ध्यान रखना या किसी मतलब इन जनरल किड्स का ध्यान रखना एंड किड्स का ध्यान रखना, घर का ध्यान रखना, तो आप उसमें यू कैन लुक फॉर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल अबाउट। एंड जब आप ग्रेटफुल होते हो तो आप क्या देखोगे, अगर आप अपने फैमिली में चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए अगर आप ग्रेटफुल हो, एंड दिस पर्सनली आई हैव एक्सपीरियंस्ड फॉर माई सेल्फ फर्स्ट हैंड कि व्हेन इन दिस लॉकडाउन स्पेशली, इन दिस लॉकडाउन जब मैंने ये एक्सरसाइजेस में से करना स्टार्ट करी थी, सो थिंग्स इन माय होम, मेरे घर की चीज़ें इतनी ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हुई थी, बिहेवियर सबका एक दूसरे के टुवर्ड्स और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, एंड हमारे बॉन्ड्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे, एंड जस्ट ब्लेसिंग्स फ्रॉम एवरीवेयर, लिटरली एवरीबडी इन द फैमिली, सबसे इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग मिलने लगी। एंड इनफैक्ट इवन इन दिस ट्रिप जब हम लोग अभी घूम रहे, वे स्टिल ऑन अ वेकेशन, सो बट पॉइंट इज कि वेकेशन पे अभी भी जब हम हैं तो हमें कुछ भी अच्छा दिखता है। सो इवन माय मामी, अब मेरी मामी भी शी स्टार्टेड डूइंग दीज सेशंस। तो अब जब हम लोग नीचे आ रहे थे पहाड़ों से, सो मसूरी से देहरादून व्हेन वी वर कमिंग बैक, so while coming down also we were just looking at the lights and thank you, thank you, thank you. So for literally everything हम लोग के साथ कुछ भी हो रहा था, so my mommy was like thank you, thank you, thank you, या thank you मनस्विता यहाँ आने के लिए, आपकी वजह से बहुत ज़्यादा मज़ा आया। So all these kind of things and so many blessings from my mommy, my mama. So it's a very good feeling and that also results, you know, in more progress. आप मैं अपनी लाइफ में आई थिंक बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली व्हिच इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड, आपके पेरेंट्स एंड आपके फैमिली की ब्लेसिंग्स तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। तो उनसे जब ब्लेसिंग मिलती है, सो दिस ईयर हैज़ रियली बीन मैजिकल, मतलब ये साल जैसा भी था, आई डोंट नो, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, पीपल वर लाइक कि यार ये तो कैसा टाइम है, घर पे ही रहते हैं, ऑल दिस एंड दैट, सब कुछ खराब हो गया है। सो आई डिड नन ऑफ दोज़ थिंग्स। जस्ट इन द बिगिनिंग आई वाज़ लाइक कि यार परफॉर्म करने को नहीं मिल रहा, आई रियली मिस गोइंग ऑन द स्टेज। बट सिंस द टाइम, luckily 1 महीने बाद ही we started with these sessions. So I was able to deal with those thoughts and instead of focusing on those things, I started doing a lot of other things. And this year, just by staying at home, the amount of progress I have made in my life related to music or just anything or just growing as a person, it's been a whole new level for me. इस पिछले कुछ 6 महीने में मैंने जितना कुछ सीखा है उतना आई डोंट थिंक मैंने अपने पूरे लाइफ में सीखा होगा अभी तक। सो इट्स रियली बीन मैजिकल। अगर आप भी ग्रैटिट्यूड दोगे किसी भी चीज़ में तो आपको हर जगह से सपोर्ट मिलेगा, फ्रेंड्स के टुवर्ड्स ग्रैटिट्यूड, फैमिली के टुवर्ड्स ग्रैटिट्यूड, तो आप देखोगे आपको हर जगह से उन सारे लोगों से आपको और ज़्यादा
सपोर्ट मिलेगा, आप और ज़्यादा हैप्पी टाइम्स, ब्यूटीफुल मेमोरीज आप बना पाओगे एंड और ज़्यादा हैप्पीनेस आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। ओके, वान्या, यू कैन कंटिन्यू। अपने आप के कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपके काम पर जाने आपको की अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वो जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं या अलग अपने सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यह है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। Right. So this also I would like to share one more example. So back in January, I went to my friend's place. So वहाँ पे I was just talking to my friend's mother. So I met her mother for the very first time. मतलब उनसे पहली बार मेरी conversation हो रही थी. So she just asked me कि अच्छा बेटा, what are you doing अभी right now presently? So I told her that I am a musician and I am a part of three bands, one of which is an all girl band and one is a commercial band, and the other we don't really perform but we are working on our music. So she was like, "Yeah, acha, and what kind of music do you guys play?" So जब मैंने अपने ऑल गर्ल बैंड के बारे में बताया एंड दिस अदर बैंड जहाँ पे हम लोग अपनी म्यूजिक पे काम कर रहे हैं, सो वो चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा प्राउडली बताई कि दैट आई एम सो प्राउड ऑफ दीज बैंड्स ऑफ माइन, एंड हम रॉक सॉन्ग्स बजाते हैं, रॉक, ब्लूज एंड जैज, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। And then this other band which is a commercial band. So usme I wasn't very proud of the fact that I play in a commercial band and mujhe Bollywood gaane bajane padte, because there was this time when I did not really enjoy playing Bollywood songs. So that was the case. So she was like कि अच्छा क्यों नहीं मजे आते Bollywood बजाने में? So I was just like that, कि I just like rock music so much, and Bollywood, it's I mean all right, but literally everybody wants Bollywood and Punjabi, and कितनी भी मेहनत कर लो, end में people just want कि बस play a simple chord and ये गाने बजा दो. So that's little annoying. But these commercial gigs that I used to do, उसमें से the amount that I used to receive per gig was दी हाईएस्ट. इतना मुझे मेरे बाकी गिग से नहीं मिलता था जितना मुझे मेरी इस एक गिग से मिल जाता था. सो शी वाज लाइक कि इसी से तो तुम्हारा काम चल रहा है, मतलब इसी से तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है एंड तुम इसी के लिए तुम ग्रेटफुल नहीं हो रही हो. सो व्हाट्स द यूज, इससे अच्छा तो मत ही करो. बट अगर कर रही हो एंड इससे तुम्हारा काम चल रहा है, इससे यू आर एबल टू डू एवरीथिंग एल्स इन योर लाइफ. Literally, so I went to Bali last year, and अगर मैं इस बैंड में नहीं होती, I don't think I would have been able to sponsor that trip for myself. फिर मुझे घर वालों से मांगना पड़ता, and a lot of other things that I could buy. It was because of this band that I was performing with. So that's when I realized कि that कोई भी आप काम करते हो, अगर आप कर रहे हो एंड उससे आपका घर चल रहा है, उससे आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही है, तो आई हैव नो रीजन टू कंप्लेन अबाउट दैट वर्क. आई अगर मैं कर रही हूँ तो उसको वाई आई माइट एज वेल डू इट विद अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड एक्चुअली एंजॉय इट. सो दैट थिंग जब उन्होंने मुझे ये चीज बताई, इट रियली हिट मी, एंड उसके बाद से आई रियली स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड. स्पेशली ये जब लॉकडाउन हुआ था एंड सारी गिग्स बंद हो गई थी, दैट्स व्हेन आई रियलाइज द ट्रू importance of those gigs with this commercial band of mine. So I started being really, really grateful, really, really grateful. And अब तो बहुत मजे आते हैं. Like we are not performing, but whatever discussions we have in the band and everything else, it's just a lot of fun. It's a lot of fun, and now we are going to start performing again in November. So I'm really looking forward to it. So the point is, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, उससे आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही है, so you have no reason to complain about your work. Start giving gratitude, and जो बाकी के आपके complaints से आप देखोगे, अपने आप चली जाएगी, अपने आप चली जाएगी, and you will start to grow in your work. आपको और ज़्यादा मज़ा आने लगेगा. You will get more reasons to be grateful about. पहले आप ज़बरदस्ती
zabardasti, I won't say zabardasti, but consciously look for things to be grateful about, deliberately look for things to be grateful about, and eventually आपको automatically you will start attracting more and more things to be grateful about. Okay. आज यह आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं जिसका काम नौकरी के बारे में अपने विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर अपने पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज को ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। अपना काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, उसका अदृश्य मैनेजर आपका अदृश्य मैनेजर आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करने के लिए अपने पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितना सारे लोग बेरोजगार हैं और नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार है। सोचें कि आप बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों की इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनका साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलती है कि वक्त कितना तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें, तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते करते हुए यह कहें, मैं किसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करने देता है, वह आपके कामकाज में उतनी जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे ये संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर बेहतर नजर आने लगेंगी। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता है तो आपकी नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन अभ्यास पर जाएं और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएंगे, उसी दिन जादुई अभ्यास पर लौटें। राइट, सो दिस इज योर एक्सरसाइज फॉर टुडे कि आज आपके पास एक अदृश्य मैनेजर है, सो देयर इज दिस इनविजिबल मैनेजर विद यू जो आज आपको हर जगह फॉलो करेगा। तो आपको इमेजिन करना है कि आपका एक इनविजिबल मैनेजर है जो आपको हर जगह फॉलो कर रहा है, एंड उसका काम क्या है कि वो आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स का रिकॉर्ड रखेगा, थॉट्स एंड फीलिंग्स रिलेटेड टू योर जॉब। ठीक है, तो इस मैनेजर का काम आपके थॉट्स और फीलिंग्स को एनालाइज करना है और उनका नोट बनाना है। तो जहाँ पे भी आप जा रहे हो उसके हाथ में एक नोटबुक और एक पेन है। तो आपके माइंड में अगर कोई थॉट भी आ रहा है अपने जॉब से रिलेटेड, बी इट अ गुड थॉट और अ नॉट सो गुड थॉट, तो वो मैनेजर उस चीज को अपने नोटबुक में लिख लेगा। बट हमारा काम क्या है कि वी हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर things to be grateful about in our work. So we have to try and not complain about our work because हमें इस मैनेजर को इम्प्रेस करना है। अगर आप अपने मैनेजर या बॉस को इम्प्रेस कर देते हो अपने परफॉर्मेंस के थ्रू,
तो वो आपको ज़रूर आपको आपकी और मदद करता है या आपके प्रमोशन कर देता है या एनीथिंग। एंड दोज़ ऑफ यू जो स्कूल में जाते हैं एंड अभी आप घर से इफ यू गाइस आर अटेंडिंग योर स्कूल यू कैन आल्सो डू दिस एक्सरसाइज। सो जस्ट इमेजिन आपकी एक इनविजिबल टीचर है या प्रिंसिपल है या मैनेजर, मतलब आपकी मर्जी, आप टीचर सोचना चाहते हो टीचर सोच लो, आप प्रिंसिपल सोचना चाहते हो आप प्रिंसिपल सोच लो, कि नाउ टुडे दिस प्रिंसिपल, आपकी प्रिंसिपल या आपकी टीचर आपको हर जगह फॉलो कर रही है एंड आपके स्कूल से रिलेटेड, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड आपकी जो भी थॉट्स एंड फीलिंग्स है आपके टीचर को अपने आप पता चल जा रहा है। आप सोच भी रहे होगे उनको पता चल जाएगा एंड आप बोलोगे तो उनको ऑफ कोर्स पता चल जाएगा क्योंकि उनको सुनाई दे देगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू कि आपको अपने स्कूल से रिलेटेड, अपने पढ़ाई से रिलेटेड आप जितनी चीजें ढूंढ सकते हो टू बी ग्रेटफुल फॉर, आप उन सारी चीजों के बारे में बात करो। एंड एग्जाम्पल के तौर पर, एंड अगर आपने अपने टीचर या प्रिंसिपल को खुश कर दिया, सो अगर आप अपनी टीचर या प्रिंसिपल या आप अपने मैनेजर को इफ यू कीप देम हैप्पी, तो वो भी आपके फेवर करते हैं। The teachers favor the students, you know, जिनको वो पसंद करती है। So if the student is a good student या the employee is a good employee and उसने अगर अपने मैनेजर या टीचर या प्रिंसिपल को अगर आप सबने इम्प्रेस करके रखा है, सो दे ऑलवेज फेवर यू, हर हर चीज में आपको प्रेफरेंस देते हैं कि अच्छा ये प्रोजेक्ट आ रहा है, ये तो इसको दे दो, या फिर अच्छा स्कूल में ये एक्टिविटी होनी है, अरे ये तो इसको दे दो, ये बहुत अच्छे से कर लेगा या बहुत अच्छे से कर लेगी, या एनी ऑफ दोज थिंग्स, अच्छा ये कॉम्पिटिशन आ रहा है यहाँ पे इसको भेज दो, शी इज वेरी गुड एट दिस एंड यू नो इसको इतने टाइम से जाना भी था, सो आई रियली वांट हर टू गो फॉर दिस। सो एनी ऑफ दीज थिंग्स आप चीजें ढूंढना शुरू करोगे एंड आप देखोगे आपका मैनेजर जितना ज्यादा इम्प्रेस होएगा उतना ही ज्यादा वो आपको फेवर करेगा, उतना ही ज्यादा आप अपने उस फील्ड में आप सक्सेस पाओगे। सो अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचे जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। सो थिंक अबाउट all the things all the things that you can be grateful for in your work। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सो दिस इज वेयर यू कैन ऑल्सो स्टार्ट कि पहले तो सबसे बड़ी बात आपको इस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो कि आपके पास अभी नौकरी है, यू स्टिल हैव अ जॉब, या आप अभी भी यू आर स्टिल एबल टू अफोर्ड एन एजुकेशन, आप अभी भी स्कूल जा पा रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको अभी भी स्कूल भेज रहे हैं एंड गुड स्कूल्स, यू एवरीबडी स्टडिंग फ्रॉम अ गुड स्कूल। सो पहले तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना बहुत जरूरी है बिकॉज सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड, उनके पास तो जॉब भी नहीं होती है या इतने सारे लोग तो स्कूल भी नहीं जा पाते, लेट अलोन अ डिसेंट एजुकेशन या अ गुड एजुकेशन या एवरेज एजुकेशन या नॉट सो गुड एजुकेशन, वो तो स्कूल ही नहीं जा पा रहे, आप कम से कम स्कूल तो जा रहे हो। सो स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल अबाउट द फैक्ट कि आपके पास ये बहुत ज्यादा अच्छी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप स्कूल जा पा रहे हो या आपके पास अभी भी नौकरी है। सो दैट इज फर्स्ट। एंड नौकरी के लिए, एंड यस ऑल दीज पीपल जिनके पास नौकरी नहीं है या स्कूल नहीं है, दे आर लिटरली यू नो विलिंग टू डू एवरीथिंग दैट इट टेक्स टू, अ लॉट ऑफ दीज पीपल वो कुछ भी करने को तैयार है टू गेट इनटू अ स्कूल या उस नौकरी को पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं, बट आपके पास वो चीज ऑलरेडी है, सो यू हैव अ वेरी बिग रीजन टू बी थैंकफुल अबाउट, टू बी थैंकफुल फॉर। सोचे कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट या कंप्यूटर। यस यू कैन ऑल्सो लुक फॉर अदर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल अबाउट इन योर वर्क, लाइक द थिंग्स दैट हेल्प यू इन मोर इन बेसिकली आपके काम को, आपके वर्क फ्लो को स्मूथ बनाने में जो जो चीजें हेल्प करती है, लाइक मशीनरीज जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, इंटरनेट हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, फोन हो गया, सो इससे कम्युनिकेशंस बहुत इजी हो जाते हैं। एंड और भी जो भी मशीनरी होगी, डिपेंड्स आप कौन से फील्ड में हो, आपका काम क्या है। सो हर एक फील्ड में पीपल हैव अ लॉट ऑफ दीज इक्विपमेंट्स, मशीनरी, एंड ऑफ कोर्स यू हैव योर फोन, प्रिंटर, इंटरनेट एंड ऑल दीज थिंग्स विच हेल्प्स यू कि आप अपना काम और ज्यादा आसानी से कर सको, और ज़्यादा ईज़िली आप वो सारी चीज़ें कर सको। तो इन चीज़ों के लिए भी आप ग्रेटफुल हो सकते हो कि थैंक यू फॉर माय फ़ोन, प्रिंटर, इंटरनेट एंड ऑल द अदर मशीनरीज़, टेक्नोलॉजी जो भी आप यूज़ करते हो, एनी एनी ऑफ दोज़ थिंग्स। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके पास, जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। सो थिंक अबाउट द पीपल हू, मतलब जिनके साथ आप काम करते हैं,
या थिंक अबाउट योर फ्रेंड्स या आपके जो भी क्लासमेट्स हैं, आप उन सब के बारे में आप सोच सकते हो जिनके साथ आप पढ़ते हो। उनमें से कितने सारे लोग आपकी हेल्प करते हैं, आपको अपने नोट्स बताते हैं, अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी तो आपको बताते हैं कि अच्छा ये काम था कर लेना, या मेरी नोटबुक ले लो, ये होमवर्क था देख लो, अगर कुछ समझ नहीं आए तो कर लेना। सो एवरीबॉडी मतलब अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो आर विलिंग टू हेल्प यू एंड वो आपकी हेल्प करते भी हैं, आपको चीज़ें बताते हैं। एंड इन योर वर्क प्लेस ऑल्सो ऑल योर मतलब आप जिनके भी साथ योर योर वर्क कलीग्स, आप उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। सो जस्ट लुक फॉर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर, कि आपको कितना मजा आता है अपने कलीग्स के साथ। मुझे नहीं पता, मतलब पीपल हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, सो व्हाटएवर यू कैन लुक फॉर to be grateful about for the people you are working with or for the people you are studying with. Look for those things. उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मचारी और डिलीवरी करने वाले लोग। सो यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट दीज अदर पीपल जो आपके काम को और ज़्यादा ईजी बनाते हैं, काम को या आपके स्कूल लाइफ को। तो आपके स्कूल में ऑल्सो यू हैव दीज क्लीनर्स जो आपके हर एक फ्लोर को क्लीन करते हैं, दे ऑल्सो क्लीन द वॉशरूम्स एंड एवरीथिंग एल्स, जो या आपके जितनी भी टीचर्स हो गई, या फिर आपके स्कूल के आपके क्लास का जो मॉनिटर हो गया, वो कितनी सारी चीज़ें हेल्प करता है क्लास में कि चीज़ें ईज़िली हो पाए एंड टीचर्स की हेल्प करना। सो ऑल दोज़ थिंग्स, आप उन सारे लोगों के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। आपके स्कूल में आपके गेट पे जो गार्ड है, आप उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। सो एनीबॉडी, लिटरली एवरीबॉडी, आप अपने स्कूल में हर एक इंसान के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो, जो भी आपके स्कूल में काम कर रहा है, जो भी उनका काम हो। एनी जॉब, प्रिंसिपल, टीचर, क्लीनर, गार्ड, एनीबॉडी। इवन अगर आपके स्कूल में माली आता है, तो आप उसके लिए भी आप ग्रेटफुल हो सकते हो कि अच्छा आपके स्कूल को इतना सुंदर रखता है, ऑल द ग्रीनरी इन माय स्कूल, इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ दिस पर्सन जो इसको मेंटेन करता है। सो एनीथिंग एंड द पीपल हू गो टू वर्क, तो आप अपने असिस्टेंट, सफाई कर्मचारी, एवरीबॉडी, ऑल दीज़ पीपल, रिसेप्शनिस्ट, आप उनके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो कि दे मेक योर वर्क सो मच ईज़ियर। ओके, इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक़्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। सो थिंक अबाउट कि जब आपको आपकी सैलरी मिलती है, तो आपको कितना अच्छा महसूस होता है, या जब आप इतना ज़्यादा आप पढ़ लेते हो एंड उसके बाद जब आपके टेस्ट के मार्क्स आते हैं, या टीचर आपको अप्रिशिएट करती है कि तुमने कितने अच्छे से पढ़ाई करी है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड ऑल दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स। तो सोचो जब आपको ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती है, तो आपको कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। सो जस्ट वेरियस एग्ज़ाम्पल्स जो आप ढूँढ सकते हो, एंड इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कुछ भी आता है अपने वर्क से रिलेटेड या अपने स्कूल से रिलेटेड, आप उन सारी चीज़ों को ढूँढ के आप ग्रेटफुल हो सकते हो। यू कैन बी ग्रेटफुल अबाउट योर बुक्स, योर पेन, योर पेंसिल, द इंटरनेट एंड ऑनलाइन आप जो क्लासेस अटेंड कर पा रहे हो, उन सारी चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजें, तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए कहें कि मैं किस चीज़ के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। यस, सो एवरी टाइम यू फाइंड समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर, आप अपने मैनेजर को बोलो कि अच्छा, मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने माइंड में आप उस चीज़ के लिए आपको अपना ग्रैटिट्यूड देना है, आपको अपनी कृतज्ञता उस चीज़ के लिए देनी है, एंड उस मैनेजर को पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली आपके थॉट्स एंड आपकी फीलिंग्स, एंड वो लिख लेगा। तो जब भी आप बोलोगे कि सपोज मैं किस चीज़ के लिए, यू कैन से मैं अपने टीचर के लिए कृतज्ञ हूँ, या मैं अपने बॉस के लिए कृतज्ञ हूँ, के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, एंड ऑल्सो राइट डाउन द रीजन वाई, कि आप क्यों कृतज्ञ हो। जस्ट राइट दोज़ रीज़न्स, आपके कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं, दैट आई एम सो ग्रेटफुल टू माय टीचर फॉर टीचिंग अस एवरीथिंग इतने अच्छे से कि मतलब मुझे हर एक चीज़ बहुत ही क्लियरली अच्छे से समझ में आती है। या इफ यू गाइस गो टू वर्क, तो आप अपने बॉस से रिलेटेड अगर देयर इज़ एनीथिंग, तो यू कैन से दैट, एंड लिटरली एनीथिंग, या आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय पेंसिल जो मैं स्कूल लेके जा पाती हूँ, या आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय कार व्हिच आई टेक टू वर्क एवरी डे। एनीथिंग एंड द रीज़न व्हाई यू आर ग्रेटफुल। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखेगा, सो जितना ज़्यादा आपका मैनेजर या आपके टीचर आपको देखेंगे कि हाँ,
जेन्युइनली बहुत मेहनत कर रहा है, जेन्युइनली बहुत पढ़ाई कर रहा है एंड जेन्युइनली बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, दिस पर्सन रियली एन्जॉयज हिज और हर वर्क एंड बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है, उतना ही ज़्यादा मैनेजर आपसे इम्प्रेस होएगा एंड उतना ही ज़्यादा वो आपको आपके काम में और ज़्यादा लिफ्ट अप करेगा और ज़्यादा आपको फेवर करेगा एंड बिकॉज़ ऑफ व्हिच यू विल जस्ट कीप प्रोग्रेसिंग इन योर वर्क और इन योर स्कूल। यदि ओके सो अभी तो आज वीकेंड है नहीं, बट इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम या आप घर से ही पढ़ रहे हो, यू कैन स्टिल डू दिस एक्सरसाइज। अगर आप उन लोगों से मिल भी नहीं रहे हो, जस्ट थिंक अबाउट ऑल दोज थिंग्स इन योर हेड एंड घर पे बैठे बैठे आप जितना काम करते हो, घर पे बैठे बैठे आप जितना स्कूल अटेंड करते हो, घर पे बैठे बैठे आप जितने भी असाइनमेंट्स करते हो, आप उन सारी चीज़ों के लिए जस्ट थिंक अबाउट ऑल दोज थिंग्स एंड बी ग्रेटफुल अबाउट ऑल दोज थिंग्स। ओके, जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। फर्स्ट, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, 1 से 3 तक के कदम दोहराए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड, आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सके। थर्ड, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजे तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा ले, मैं क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करे। सो ये ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता आप कैसे महसूस कर सकते हैं? व्हेन यू लुक फॉर द रीजन व्हाई यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग। तो अगर आप बोल रहे हो कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई टीचर, ये तो आपने बोल दिया, बट क्या आपको जेन्युइनली सच में फील हुआ अपनी टीचर के टुवर्ड्स ग्रेटिट्यूड? इसीलिए वाई फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने टीचर के लिए क्यों ग्रेटफुल है। सो जब आपको उसका वाई पता चल जाता है, आपको उसका क्यों पता चल जाता है, तो आप उतनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। सो यहाँ पे इन्होंने वाई बताया नहीं है, बट दिस लाइन क्लियरली स्टेट्स कि अगर आपको ज्यादा महसूस करना है, ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता आप तभी महसूस कर पाते हो जब आप उसका वाई सोचते हो। सो किस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो एंड आप क्यों क्यों ग्रेटफुल हो, तो क्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फोर्थ, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। Okay, so thank you so much, Vanya, for reading the chapter for us in Hindi. Now, who would like to nominate themselves to read the chapter in English? Okay, Divyanshi, wait. Okay, ठीक है. Divyanshi, you can unmute yourself Okay, ma'am. and start reading the chapter. Day 6 works like magic. If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has never ever been before. Push it to the wildest edges of edges. Then you force to the realm of magic. Then you force it into the realm of magic. Then he forced it to the realm of magic. Tom Robbins, B. 1936 writer. Um, Manya, Divyanshi, wherever you are, there's a lot of disturbance in the background. Okay, ma'am. So I am going to nominate somebody else to read because बहुत disturbance आ रही है. Okay, ma'am. Okay, thank you so much for nominating yourself. So, okay, Manya, or wait, Tia hasn't read yet. So Tia, you can unmute yourself and you can start reading. Tia, please unmute yourself and start reading. How can it be the person? Okay, all right.
Wait, somebody else. Vanya, do one thing. You only read the chapter in English as well. Yes, ma'am. Yeah. How can it be that a person who is born into to, how can it be that a person who is born into total poverty starts out with a nothing and has very little education goes on to become a president or a celebrity or builds an empire and becomes one of the wildest people in the world? And how Okay. it is Wait. Just a second. Can somebody else nominate themselves to read the chapter in English? Somebody who can be a little fluent and pronounce the words correctly. Okay, Satwik, please unmute yourself and start reading. Thank you, everybody else, for nominating yourself. Thank you so much. Satwik, please start reading from here. Am I audible? Yes. Great. Yeah. From this paragraph, right? How can it be that? Is that the paragraph? Yes. Cool. How can it be that a person who's born into total poverty starts out with nothing and has very little education, goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world? And how is it that two people can start out in the same career and yet one person's career goes from success to even greater success, while the other person works himself or herself into the ground with little success, no matter how hard they try? The missing link to success is gratitude, because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So, without gratitude, it's impossible to have permanent success. Right. So iska sabse brilliant example is in our country itself. So our very own prime minister, Mr. Narendra Modi. So he used to sell tea. Unki chai ki dukaan thi, and he did not really have a proper education or whatsoever. But now he's the prime minister of India. So he's one of the biggest and best examples. इससे भी ज़्यादा अच्छा example of how gratitude and belief आपको कहाँ तक लेके जा सकता है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इज ऑफ धीरू भाई अंबानी. सो वो पहले एक पेट्रोल पंप पे वो मतलब ही यूज्ड टू वर्क इन अ पेट्रोल पंप, एंड उनको उससे जो भी सैलरी मिलती थी पर डे, आई थिंक 50 or 60 रुपीज ही यूज्ड टू गेट, और 70 मैक्स. तो उसमें से जब उनको उनकी जो रोज की जो सैलरी मिलती थी, वो उसमें से ही यूज्ड टू गो टू ताज होटल, एंड वहां पे जाके वो उसमें से 40 रुपीज की, उस टाइम पे 40 या 50 रुपीज की वो चाय पीते थे. सो इमेजिन ही इज अर्निंग जस्ट 60 or 70, एंड उसमें से 40 रुपीज वो तो चाय में ही यूज टू स्पेंड. एंड व्हेन उनके फ्रेंड्स उनसे पूछते थे कि यार इतनी मतलब महंगी चाय पीने की क्या जरूरत है, एंड ऑल दोस थिंग्स, तो उनका यही रिप्लाई आता था दैट आई रियली वांट टू फील हाउ डज इट फील लाइक टू बी रिच. कि मतलब कि मैं इतनी महंगी चाय इसलिए यहाँ पे आके पीता हूँ बिकॉज आई वांट टू सी हाउ रिच पीपल आर, हाउ दे बिहेव, एंड कैसा फील होता है टू बी रिच. सो ही डिड एवरीथिंग दैट ही कुड टू फील रिच, कि ऐसी चीजें जो जो वो करे तो उनको ऐसा लगे दैट यस ही इज आल्सो अ वेरी वेल्दी पर्सन. तो वो इसलिए जाके वो चीज करते थे, and that really helped him in visualizing and believing everything that that wealthy people do, that rich people do. And as a result of this, a person who used to work in a petrol pump goes on to become one of the richest people in the world, and उनकी एक सबसे ज़्यादा successful company बन जाती है. And now unke sons, they take over. So Dhirubhai Ambani, a very wonderful person, and gratitude and belief, these two things, in dono cheezon ke wajah se he became one of the most successful people in the world. And now let's take an example of his kids. So unke do bacche hai, which is Anil Ambani and Mukesh Ambani. So why is that कि जब उनके बच्चे, so दोनों लोगों को they got equal ही उन्हें सारी चीजें मिली थी उनके बिजनेस से रिलेटेड, रिलायंस. सो रिलायंस वाज is still a very big company. So what I'm saying is कि अब दोनों लोग दे स्टार्टेड एट द सेम लेवल. अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी दोनों सेम लेवल पे स्टार्ट करे, दोनों के पास इक्वल रिसोर्सेज थे टू work on their business, to promote their business and everything else.
बट व्हाई वाज इट कि मुकेश अंबानी जी का उनका बिजनेस इट जस्ट केप्ट फ्लरिशिंग फ्लरिशिंग फ्लरिशिंग, एंड और भी नए नए उन्होंने वेंचर्स खोले, जियो, वन ऑफ द बिगेस्ट नाउ कम्युनिकेशन कंपनीज इन इंडिया. So all those things, and why was that कि जो अनिल अंबानी के जो रिलायंस कंपनी थी एंड एवरीथिंग एल्स, वो बस ही जस्ट जो जो सक्सेस थी वो आ ही नहीं रही थी, आ ही नहीं रही थी, एंड जस्ट थिंग्स जस्ट kept going down the drain, down the drain, down the drain, debts बढ़ते गए, all these things. Why did that happen कि एक भाई इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ एंड दिस अदर भाई उनका उनके साथ सेम क्यों नहीं हुआ, जबकि रिसोर्सेस तो दोनों के पास बहुत ही ज्यादा थे. Why did that happen? Anyone who would like to unmute themselves and share anything or write it down in the chats, आप कर सकते हो. Nobody. Am I even audible to everybody? So, hi, am I audible? Yeah. Yeah, I mean, there have been instances where Anil Ambani has been like uh, not being grateful. I mean, to be precise, uh, Anil Ambani has been always involved in like cases suing people for defamation and things like that. Not sure like to the depth, but superficially at least it looks like he wasn't focusing on what he has gotten. That is, if you're not focusing on what you have gotten, means that you're not grateful for what you have. Yes. As opposed to, so if you, since both of them split Reliance Industries from the father, which means that they had equal opportunities to do, but one didn't use it judiciously enough to to expand the company. One did, the other was sucked up in lawsuits and defamation cases and whatnot, and therefore, so which means that if you're not grateful for something, if you're not respectful for something, also means that you're not grateful for it, and you're not spending Exactly. time on it means that you're basically not respecting and grateful for it. Yeah. Right. Thank you so much, Satvik. Yes, exactly. So this one person, उन्होंने he took everything for granted, all the resources that he got, he took it for granted, and all the other things that he did. So all these things जो उन्होंने की थी, none of it was, the act of being grateful या kindness. दूर दूर तक, it was missing. So because of that, उनकी company वो लॉस में जाती गई जाती गई जाती गई. एंड ऑन द अदर हैंड मुकेश अंबानी, इफ यू आफ्टर दिस, इफ यू वांट, just go and read about both these people. So मुकेश अंबानी, he's been a very उनके घर में they have this place which is exclusively क्या बहुत बड़ा मंदिर है, एंड वहाँ पे all the people वो वहाँ पे रोज जाके they give gratitude and thanks to the god for everything that they have, literally everything, हर एक चीज के लिए. And so because they are very respectful and अपने काम की worth को जानते हैं, and they know what it takes to get here, and किसी भी चीज को for granted नहीं लेते हैं, and above all very respectful towards their work, and उसको acknowledge करना and gratitude देना. So this was the main difference between the two brothers, and that is why एक की company flourished and success आती ही गई आती गई आती गई आती रहती है, and दूसरे की it just kept going down. So perfect example, एक ही family में somebody who started with almost nothing, he went on to become one of the most richest people in our country. And जब उनकी चीजें उनके sons को जब दी गई, now अभी एक ने तो, this person started with nothing. Now when two people have a lot of things, अब एक ने कंप्लेन किया या ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, जिसके पास कृतज्ञता नहीं थी, जो भी उसके पास था वो भी उनसे ले लिया गया, एंड जिनके पास कृतज्ञता थी, जिसके पास जो है उसको और दिया जाएगा. सो वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल, एक ही फैमिली में सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे. सो इफ यू वांट, यू कैन जस्ट गो एंड रीड अबाउट ऑल दीज पीपल इन डिटेल. ओके. Right. To bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. The more grateful you have, the more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. Whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have in abundance. Whoever does not have gratitude for their work, then what he or she has will be taken from him or her. Satvik, your voice is breaking.
Is it? Am I? Is it? Yeah, now it's better. Okay. Yeah, I was a little far from my mic, maybe. Yeah. Okay. Should I read this quote again? No, that's okay. You can Great. When you're grateful for your job, you will automatically give more to your work, and when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you're not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you, and as a result, you will never be happy in your work. You'll never give more than you have to, and your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. If you're a business owner, your business's value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business spirals downward. If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity, and when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work. And you shouldn't settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have. राइट सो अभी इवन इफ अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हो बट इट्स नॉट योर ड्रीम जॉब यू स्टिल हैव टू बी ग्रेटफुल अबाउट इट अगर आपको अपनी अल्टीमेटली इफ यू वांट योर ड्रीम जॉब यू फर्स्ट हैव टू बी ग्रेटफुल for your current job, for the job that you currently have. And same, if it is not your dream school, या आपको मे बी आपको डिफरेंट सेक्शन में रहना था, आपको डिफरेंट टीचर चाहिए थी, तो मे बी इफ इट्स नॉट योर ड्रीम section of the class, so every class has different sections, class 5, section A, section B, section C. So आपके जो भी, if you want कि आपको आपके फेवरेट सेक्शन में जाना है या फेवरेट स्कूल में जाना है या आपको अपनी इन फेवरेट टीचर्स से पढ़ना है, सो उसके लिए आपको उन सारे चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने लाइफ में सबसे पहले यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर करंट टीचर, for your current classmates, for your current section that you are in, or your current job. So, for the job people, your job or your work, या your business, and for the school people, आपको जो भी आपके school से related आपके जो भी dreams है. So, be grateful where you are currently in your life in terms of all these things. And उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे. Okay. Today, imagine that you have an invisible manager whose job it is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for so that at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, your work success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed who would give anything to give a job, to have a job. Think about the time saving equipment you use, such as phones, printers, the internet, and computers. Think about the people you work with and the friendships you have with them. Think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspects of your job that you love doing. Have your invisible manager make a note of each time you find something you're grateful for by saying, I'm so grateful for what? The more deeply your manager can see you are feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible
that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident, they are simply gratitude's magical power at work. If this works like magic practice falls on a weekend or when you're not at work, move on to the next day's practice or practices and then go back and use this magical practice on the first day you're back at work. Magic practice number 6 works like magic. 1. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel grateful for each one. And feel the gratitude for each one. 2. While at work today, imagine you have an invisible manager following you around, taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can to be grateful for. 3. Have your manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I'm so grateful for what, and feel as grateful as you can. 4. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Okay, thank you so much, Satvik, and everybody else for reading the chapter for us English. And okay, now if any of you have any doubts related to today's chapter, yeah, any of the chapters, yeah, कुछ भी, so you can unmute yourself and ask, yeah, आपको अपनी dream list से related कुछ doubts है, any of the exercises. Ma'am, Mm-hmm. ma'am, in the first exercise in day 6 homework, we have to rewrite the 3 days homework again. 3 days homework, मतलब? मैम जो हमने पहले के 3 दिनों में करा था होमवर्क, तो फिर उसको वो वापस करना है क्या? वो फर्स्ट वाले में जो था। So day 1 was count your blessings and day 2 is आपकी magic rock. So ये दो जो exercises है, ये दो exercises आपको रोज करनी है. बाकी की जितनी भी exercises है after day 2, जो day 3 की हो गई, which was relationships, day 4 was health, day 5 was money and today is day 6. तो ये exercise आपको दिन में, मतलब आपको day 3 की day 3 पे ही करनी है, day 4 की day 4 पे करनी है. बट आपके पास ऑप्शन है, सपोज आपने डे 3 की करी डे 3 पे, बट आपको डे 4 पे भी करनी है, सो यू कैन डू दैट. तो डे 4 पे जो एक्सरसाइजेस आपको हेल्थ की बोली गई है वो तो आपको करनी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको उसमें रिलेशनशिप वाली एक्सरसाइज का भी एडिशन करना है तो आप वो भी एक्स्ट्रा आप कर सकते हो. सो दैट इज अप टू यू. बट जो डे वाइज एक्सरसाइजेस बोली गई है, जिस दिन की जो एक्सरसाइज है वो तो करनी है. उसके अलावा आपने अब तक जो भी एक्सरसाइजेस की है आप उसको भी ऐड करना चाहते हो अपने उस दिन के स्केड्यूल में, सो यू कैन डू दैट. इज योर क्वेश्चन आंसर्ड? यस मैम, थैंक यू. Okay, thank you so much. Anything else that anybody wants to ask or share? Any experience that any one of you would want to share? I have a question. Mhm. So, in this particular exercise, so it says that you have to write that you're grateful for what. Is why also important in this thing? For example, Yes, because उसके बाद there was this line कि yeah. look for what you're grateful for and feel as grateful as you can. And the degree, the degree at which you feel gratitude is directly proportional to what you will receive. So the why factor helps in deepening that gratitude and deepening that feeling. So just saying that I'm grateful for my boss, does it really make you feel gratitude towards your boss? It just feels very tokenistic at this point. So yeah, why is Right. important? Yeah. So why is important? Why is always important? So every exercise we do, अगर इस book में कहीं पे they forget to mention कि आपको why लिखना है, still आप याद रखना कि आप जब भी reason लिखोगे कि आप किस चीज के लिए grateful हो, write the why as well, because उसी से आपको you will feel the gratitude. Yes, have a great day, Neeta ji. Thank you so much for joining me for today's session. All right. Anything else that anybody wants to ask? Rachna ji, you've raised your hand. Do you have a question? Yeah, ma'am. Ma'am, I want to ask you that at present I am a freelancer makeup artist, but from last 2 years, actually, I shifted from my prior workplace, from my prior house. I have shifted somewhere else, so I'm not getting clients actually.
Prior, I was having so much clients, so much, my business was so much flourished, and it is suddenly changed from last 2 years. So right now, what I to for today's session, what should I have to blessed for? Because I am not having a single client from last 2 years. सो So my 2 साल question, से आपके सिंगल क्लाइंट भी अभी तक नहीं आया, 2 साल से आपको एक भी क्लाइंट नहीं मिला है? बहुत कम, आई थिंक बहुत दो चार, आई थिंक 5-6 क्लाइंट, आई थिंक। राइट, सो आप उन क्लाइंट्स के लिए आप ग्रेटफुल होना शुरू हो जाओ, एंड पास्ट में आपके जितने भी क्लाइंट्स आए हैं, आप यू कैन स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल टू ऑल दोज अदर क्लाइंट्स. डू यू आल्सो हैव अ टीम ऑफ पीपल दैट यू आर वर्किंग विद, या आप अभी अकेले कर रहे हो? Right now, I don't have team. Prior, I was having my assistants. ठीक है, सो आप अपने असिस्टेंट्स के लिए भी, आपके पास्ट में आपका जो भी वर्क था एंड प्रेजेंटली, दोनों चीज़ों Okay. के लिए आप ग्रैटिट्यूड दो, कि पास्ट में आप जिनके भी साथ काम कर रहे थे उनके लिए ग्रैटिट्यूड, आपके पास में जो भी कस्टमर्स थे उन सब के लिए ग्रैटिट्यूड, एंड ऑल्सो प्रेजेंटली, अभी तो Okay. मेन फोकस इज प्रेजेंट पे, बट स्टार्ट विद योर पास्ट एंड फिर आप प्रेजेंट पे आओ, एंड प्रेजेंट Okay. पे जो भी मतलब थोड़ा बहुत भी है एटलीस्ट है, तो यू स्टिल एबल Okay. टू वर्क अ लिटिल, तो उसमें जो भी चीजें आप ढूंढ सकते हो, आप जहाँ से भी काम करते हो, आप इनफैक्ट आप अपने मेकअप किट के लिए भी आप थैंक यू बोल सकते हो, वट एवर इक्विपमेंट्स यू हैव, कि अच्छा इनसे ही Okay. तो आप काम करते हो, इन्हीं से तो, बिकॉज अगर आपके पास यही नहीं होगा तो आप मेकअप कहाँ से करोगे, एंड Mm-hmm. how will you cater to your client. So you can also be Okay. grateful to your equipments, because those are really important and it makes your work also easier. So Okay. yes, so whatever brands that you use, जिस भी brands के आप मेकअप या ब्रशेस या और जो भी चीजें होती है, I don't have any idea, much idea, Mhm. तो आप उसके लिए आप gratitude दे सकते हो. Okay. Okay. Yes. Okay. Thank you so much. Thank you. Okay, Thank you. thank you for your question. Anything else that anybody wants to ask? I would like to share like a small. Yeah, you can decide. uh, who is it, who's speaking? I'm confused. Can we do this exercise with magic rock exercise? uh what do you mean by मतलब magic rock exercise के साथ? Can you please elaborate? Meanwhile, Satvik, you can share whatever you were I going. think Yukti had something to say, so I'll let her say first. Okay. Yeah, Yukta this side, Maneswita. So I just want to ask that you always give um, suggestions to write everything in the means letter, bold letters. So in capital letters. So I just need to ask that what is the logic behind writing the words in the capital letters? ओके, सो नॉर्मली ऑल्सो जब आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हो, वट एवर टेक्स्ट यू रीड, सो अगर हर एक चीज कोई चीज स्मॉल में लिखी जाती है, सो उस पर उतना ज्यादा फोकस नहीं आता है. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू रीड अ टेक्स्ट, कोई चीज नॉर्मल होंगी एंड देन सर्टेन वर्ड्स वो या तो बोल्ड में लिखे होंगे या तो इटैलिसाइज्ड होंगे, तो उस पे आपका फोकस ज्यादा जाता है, सो एम्फोसिस इज मोर ऑन दोज थिंग्स, राइट? यू गेट माई पॉइंट? Right. Yeah, so Yeah, it's yes. mainly for that कि अगर आप बोल्ड में लिखते हो तो because it's bold, it's in capitals, तो वो अपने आप ही it reflects, you know, that how magnificent and powerful, आप उसकी पावर बढ़ा दे रहे हो. कोई चीज स्मॉल लेटर में लिख रहे हो, हाँ चलो ठीक है, बट जैसी कोई चीज कैपिटल में आती है, सारी चीज कैपिटल, तो अलग ही अटेंशन जाता है उस पे. सो जस्ट दैट इट रियली मेक्स यू फील मोर ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग. तो अगर आप हर एक चीज पूरा पूरा बोल्ड में लिखो एंड इन कैपिटल लेटर्स, इवन बेटर, इवन बेटर. Okay. Okay. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you for your question. All right, Satvik, you can unmute yourself and share. Yeah. So, uh, first, I mean, two things. First is in terms of how, if you're not grateful for your work, means that even if the promotion that you want to seek may not get, primarily because since you're not grateful, you're not 100% putting your 100% into the work, means that people around you, so especially if you're working in a corporate environment, like it's a thing that people say that everyone's watching you but no one's going to say anything, and when the time comes, when the time to make a decision comes, people act upon it, and you never know how that happens. And especially that is so true based on the amount of experiences that I've heard from people in places where I've interned so far, like during my college days, is that often more than not, like if people are not seen as an active participant, means that uh, they
two things, right? I mean, at the core, it means that they're not as much interested, and therefore, if you're not as much interested, means that you're probably not respectful or grateful for the work that you have. Which means that if people, I mean, the promotion that you, the end result that you're probably hoping for so much is not going to happen because the starting point was not correct. So Right. if people, I mean, the way to start is that you can't be starting at this point that, oh, I'm not grateful, therefore I have to start be I mean, I need to get this promotion, therefore I need to be grateful. No, because that is just superficial, and like, just, it's like being grateful. So being grateful is an end in itself as opposed to a means to an end. So if you're grateful, it's just a nice thing, it just makes you more happier. I mean, sulking about your job is not going to work, something I've realized while I was interning at this company. So yeah, so that is one thing that everyone should, I think, take away from this. Second thing is that a lot of, I get that, like, a lot of people here have very legitimate concerns, and it's like, and it's something to feel sad for, and like deeply, like, uh I don't know. So, like, so the thing is that, so for example, the thing that I have observed from my experience is that since I just graduated from college, therefore a lot of my juniors and people who are in colleges in like different parts, in like all parts of the country, are like, often like very active in like the debate societies and whatever. So because of the lockdown, so all of that can't happen because all of these competitions are places of mass gathering. So people were like, what to do now, like, we're so, something we're so passionate about, and like just suddenly stopped, right? So, and then within like the, so lockdown started all over the world in March. So क्या हुआ था कि मार्च के बीच में ही there was this Japanese person who was also kind of involved in this activity, and he made a website specifically catering to like the debating formats that we practice all over the world. So everyone, and that just, everyone was so grateful for it, that came like a blessing to all of us. And the, because of this, and not just that, right? So a lot of, because of this activity, and like how gaining popularity, Zoom has gotten so many features now which cater to like specifically for debating, and how it creates like different rooms for preparation and all of that, and extensive in amount of features that Zoom has gotten now. And because of that, it is, I mean, Zoom has become a lot more secure also. So if people just, I want to say that if people in adversities, I think the real test to our potentials, like capabilities of like bettering ourselves, comes from like being grateful to the existing things. And like a lot of like new things come, and which makes a lot of things better. Because of this, accessibility has increased a lot. Like earlier, people, if the people had to do an international tournament, like for example, right now there's happening something called Asians. It's equivalent to an Asian Cup in sports. So a lot of Indian teams have made it to the knockout rounds, which is like a proud moment for all of India right now. So within, in adversities, if you're grateful for things that you have, like miracles happen, like a lot of things get better for you. So yeah. एब्सोल्युटली, यस। सो ब्रिलियंट पॉइंट मेड कि अगर आप उस इंटेंशन से काम कर रहे हो कि अगर मैं ग्रैटिट्यूड दूंगा तो पता है मेरी जॉब ना बदल जाएगी, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल जाएगी। सो दैट्स ऑलमोस्ट so that's sort of an act of, how do I explain it, but sort of selfish. I can't find a better word, but I hope you So all get my there's point no ki, problem with selfish either. I mean So definitely, but that's more like that, अगर मैं ग्रैटिट्यूड दूंगा तो पता है ये हो जाएगा, एंड जो मेरा करंट, सो दैट्स इन अ वे नॉट बीइंग वेरी ग्रेटफुल अबाउट योर वर्क इफ यू आर डूइंग इट विद द इंटेंशन कि अगर मैं ये करूंगा तो मेरी करंट जॉब से मैं दूसरे जॉब में आ जाऊंगा जो मुझे जॉब चाहिए। सो दैट इज नाउ नॉट बीइंग वेरी ग्रेटफुल अबाउट योर करंट वर्क, so not entirely grateful for your current work. So do it with the intention कि आप अपने current काम को, your main focus should be enjoying your current work and not being like कि अच्छा अगर मैं अपने current work को gratitude दूंगा तो ही मुझे वो चीज मिलेगी। Not that. Point is कि आप अपने current work को आप just enjoy, focus on your current work and look for blessings in your current work. आगे की चीज अपने आप बेहतर हो जाएगी, अपने आप बेहतर हो जाएगी। But right now just focus on presently what you have and be रियली रियली ग्रेटफुल। अगर आप इस थॉट से ग्रेटफुल होगे कि अगर मैं ग्रेटफुल होऊंगा
तो मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिलेगी, then that's not really a feeling of gratitude for your current work, क्योंकि आपके माइंड में ये आ रहा है कि आपको फिर भी अभी दूसरी जॉब चाहिए, which means you are not happy with your current job. So be happy with what you currently have and just trust in the process कि आगे जो भी होगा it will be for the best. Just my suggestion. Okay. Uh, so Nandita asked कि मतलब you take your magic rock with you to your work and whenever you see the rock on your table you can be grateful for your work today. Yes, I mean you can definitely add that कि जब भी आप rock देखो then you can look for something else also to be grateful about. But even when you don't see your rock, just constantly keep on looking for things to be grateful about in your work. Is your question answered? And you can do that with the magic rock as well. Okay, ठीक है. Thank you. Anything else that anybody wants to ask? All right, ठीक है. No questions. So thank you so much everybody for joining me once again for today's session. And I will see you all tomorrow at the same time. Sorry, 7:20. All right. Thank you so much. And once again, Thank you. Thank you. Thank you. thank you. Thank you. All right. And Thank you, ma'am. Thank you so thank much. you. Thank you. Also, once again, especially the kids, I will still recommend you all to register for the MIS program. I mean, after just reading the PDF yesterday, I thought I should mention it again. If you register for the MIS program, it will be much, much beneficial for all of you. All right. Okay. So thank you so much, everybody else, and have a good day. Have a magical day at work and your school, and have a magical day in general. Okay. Thank you.